Let me share my screen. Entire screen. Okay, please tell me if you can see my screen or not. It is visible to you all? Yeah. Yes, it's Okay. Okay. So my motto for this tutorial is to create a tutorial where I will teach you these things. What are the things? The basic concept of HTML, the basic concept of CSS, then library of CSS that is called a Bootstrap, then a Java. Then we will move forward to learn JavaScript. In JavaScript, we will learn three type of I would say JavaScript. One is the plain vanilla JavaScript. Then we will learn how we can use this ECMAScript and what it is. And at last we will learn the TypeScript. Okay. Once we learn these three things, once we have a knowledge of these three things, then only we can go to the advanced version of JavaScript. Whether we will work on a front end or a back end. But before going to any front end or back end for the month stack development, we should have a knowledge of these three things. Okay. So last time when I started the tutorial, I directly started with the Node and React, and then during the tutorial, I was uh, I able to understood like if it would be better like if we can give some hands-on in HTML, CSS, JavaScript, and then we will move to React. Hence, in this tutorial, I have started from very scratch. So, for first 2-3 class, I would say 2 week, we will be in this three place only, and then we will move forward in a speedy way. Okay. The fourth topic which I will try to teach you is React. Then we will learn Node and Spring Boot also. Spring Boot use Java, so I would request you to have a basic knowledge of Java so that we could able to learn like how can we set up our application in Spring Boot, how we call the API, and since why I choose Spring Boot and Java both, sorry, Node.js and Java both, because I want to create this application in microservice based architecture, and in that I want to I want to utilize the flavor of multi language. Okay, like there should be no boundary of any languages, so we could have multiple language, and for database also we could use a multiple database. Like for Node.js, we can use MongoDB database, and for Spring Boot, we can use MySQL or Postgres, and vice versa. I mean, with Node.js also, we can use those those kind of language. So uh, if our database, yeah. So Sir, what I would, yeah, tell me. MySQL will be a separate application which need to be installed. Yes, yes. MySQL, see, MySQL is a database, okay, which we need to, if we want to run in our local machine, then we have to install that also. Okay. And Is it then, possible? Like MongoDB, we can mhm. have the MySQL that in a web interface we can create our database and store Yeah, our yeah. database. Yes, yes. See, everything should have a web interface. There is no question of it won't have. Everything should have a web interface. Otherwise, how it will run on a server, right? So it should be in a server or in a web interface like that. Okay. Then we will learn something about this Docker, like what is Docker and why we will use those things. And since we are learning microservice, then I will teach you something about service discovery, like what is service discovery, how we discover the different services, okay, in microservice architecture, and some Jenkins pipeline, like how we can set up the pipeline in if we want to deploy our code in any place, whether it's in cloud or whether it's a dedicated server or even in your local machines, right? Then some concept of cloud analytic, AI, some mini project, and one e-commerce project. So this is my planning to teach you all these things, because I think other than Spring Boot, I know those things. Okay, other than, I mean, I have very basic knowledge on Spring Boot. So other than those,
I mean, these are the things where I worked in, where I used to work in my project. So I will try to teach you those. Okay. So today I will simply start with the basics of HTML. And before starting this, I think every one of you have some knowledge about the HTML. So I want your view, like what is HTML, or before going to that, going forward to that, I want to know your knowledge. Like, why do we need these three things first? HTML, CSS, and JavaScript. The knowledge of these three technologies first, then only you should go for any framework for web building application. Can anybody explain me this? Like, Yes. why we should have a good knowledge of HTML, CSS, and JavaScript first before going. I mean, if you're going to develop any web application, then why this is a prerequisite? Yes. Can I explain, sir? Yes, yes. Suppose whenever we run a web application, okay, whatever it is in .NET, whatever it is in Java, or whatever it is in PHP, okay, server understand hypertext markup language, okay. So Okay, for designing the interface, okay, the front-end interface, we need to communicate with the servers. We need a language we can communicate with the server. Okay, for that reason we use hypertext markup language, okay, to actually design the front end. Okay, it's the first one thing. Second one thing, whenever we are representing the HTML to the outside world, to the outside user, okay, then the look and feel of the HTML should be controlled. Okay, we are actually using some bodies and head tags, so it doesn't mean that whenever we are representing that thing to the other user, okay, that not look like good. Okay, so we use the CSS bootstrap to actually give a good look and feel of this particular interface. Second one thing. Okay. Third one thing is that the JavaScript. Okay. Whenever we dominate on the particular HTML, okay. So how they can react? Also, how suppose we are actually giving a value. Okay, the value will be processed to the server, or value will be passed to the backend code. Okay. So for the communication purpose, we need JavaScript. okay, This is the basic understanding. okay, okay. Anybody else? Okay. So, I mean, anyone can just dig your Hello, answer. I don't. Yes, you should not be correct, but just be hello. communicate. Am I audible, Yeah. sir? Hello. Yeah, you are audible. Yes, yes. Okay. So if we talk in layman language, then HTML is the means basic structure which is used to be structuring our website. Okay. Like in our body, the bones are the structure of our body, right? Correct. So and CSS is for styling. So our ears have some colors, or our nose has some colors, our skin has some color, right? So Correct. for coloring or for styling, we use CSS. And if we tell that the brain is the main part or is the logical part of our body, right? So Right. JavaScript is the brain for our website, which will handle Okay. all the events and other things like API calls or something like that. I think this is the most important thing for HTML, CSS, and JavaScript. Yeah, yeah. You are all. Yes. Anybody else want to put his view? Yes, sir. So am I audible? Yes, you are audible. Yes, sir. So my thinking is that, sir, by knowing the HTML, CSS, JavaScript, at the end of the day, browser is going to understand only these three things, and everything that we are learning, like React, JS, and TypeScript, it basically work over the top of it. So knowing the fundamentals is very much important while building anything on the framework, like React, JS, something like that. So I think the HTML, CSS, and JavaScript is quite important, and also it also provide a proper structure, styling, and some actionable things with the help of JavaScript as well. So yeah, that's my point of view. Yes, yes. Correct. So all of you are correct. Okay. So yeah, I mean, I also compare this thing as a body. I mean, a website can be compared with our human bodies. Okay. So as
who was the second person who give this example? May I know his name? The second who compare HTML with the body? Ankush Ladani. Ankush. Yeah, hi, Ankush. So as per Ankush, like HTML is our skeleton, right? So yes. So whenever we create any website, okay, or anybody create anything, whether whether uh, whether if we compare our body, whether we compare the design of a car, right? So it start with the sketch or start with some kind of mean mean logical thinking, like how it would be, whether it would have four legs, whether that thing would have four tires or two tires or those kind of thing. So without before starting a big thing, we should start by designing the basic of it, like how it should be, like for our human being. If we compare with this, like our bone decide our structure, like how tall we would be, how long we would be, how our nose would be, how our eyes would be. So those kind of thing, that kind of flavor are been added by HTMLs. Okay, but why CSS was needed? See, uh, when it compile browser compile the HTMLs. Okay, it it somehow transfer it into some kind of markup, some kind of it gives some visible effect. Okay, and most of the time it is fine, like with only HTML also we can create the structure, but it would be like a sketch which don't have much color. So to make it more colorful, make it more attractive, to make our website more attractive, more colorful, and to fit something, mean it might be like like your ear is hanging, right? So to do those kind of thing uh, out of the box, which can't be done by your skeleton. Okay, like your hair we should comb our hair to look beautiful, right? So that thing cannot be done by the skeleton. That thing can be done from the outside world, whether with the help of a comb or with the help of a dye or any other thing. So that kind of feature, that kind of thing are provided by the CSS. It beautify the thing, not only beautify the thing, it rectify and correct the structure of our websites. Okay, and 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 it also provide you some effects. So with the help of CSS, we can beautify, we can rectify, we can make our website attractive and provide some feature which we cannot add through HTMLs. Okay. And regarding the JavaScript, so if you compare with our body, so our vein transfer the signal from one place to another. It help us to taste, it help us to sense everything, and provide the message to the brain also. So JavaScript work like that in, I would say, web development. Okay, it can help you to create your website more attractive. Like through JavaScript, we can do multiple functionality to make your website work properly. Secondly, it help us to communicate with the outside world. It can take data from HTML, from forms, and send data to the outside world, or it can take data from outside world and add data into your HTML. So JavaScript act as a mediator. um, it act as a mediator to take, receive and send data from HTML to the outside world. It help to make your HTML design more powerful, more compact. Okay, and it helped the CSS also in many ways to help in uh, making your website more compact, more attractive, and more stable. Okay, so in short, I would say these are the reason why
we need this thing. Why should we should have a knowledge of this thing before jumping into any web development? Okay, I'm mainly for the front end. And if you are going for the back end, if you don't have these knowledge also, you don't have to worry. You just have to worry about how we send JSON to the front end, and then how we receive our data from the front end. So, but for front end, these three things are must. Then only you should jump into any framework like React, Angular, Vue, or anything else. So I think I was clear with this thing, right? Anybody have any other view? Sir, Yes. yes, one request to your end. In future, as like you are actually teaching this tutorial, this training with Java as a backend. Okay. In future, can you share any? Can you start any training for .NET backend with front end See, React and HTML? yeah, since we are working, see, since why I added these two language, or why I added microservices, because with the help of this, in this project you can include any language. This microservice term make your website or make your application as platform independent. Okay, since we are not clubbing our front end and back end together, so if you have a knowledge of this thing, you can include any language in your project, or or you can work in any project which have any languages. In big project, it work like this, like uh, they follow the microservice architecture. Why people went to microservice architecture from monolithic? Anybody have an answer for this? Anybody heard this term like microservice? What is microservices? Yes, sir. So if you have, then can you explain why people preferred microservice over monolithic architecture? Or what is microservice architecture, and and how it is different from traditional monolithic architecture? So can I say, sir? Yes, yes. Speak in any language. Okay. Language is not a barrier. If you can speak in Hindi, Okay. no worry. Speak. Yeah. Hmm. Okay. If you know So Tamil, basically microservice, हाँ, yeah. so माइक्रोसर्विस में बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि मतलब उसमें एक फ्रेमवर्क पे डिपेंड नहीं रहता है। जैसे हमने मतलब ऑथेंटिकेशन सिस्टम किसी और लैंग्वेज से बना लिया, फिर लॉगिन सिस्टम किसी और मतलब ऑथेंटिकेशन, फिर पेमेंट सिस्टम हो गया, फिर मेल सर्विस को किसी और टेक्नोलॉजी से बना लिया, और उन सभी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके हमारी पूरी वेबसाइट चलती है। तो ये हुआ माइक्रो सर्विसेज। बट मोनोलिथिक में ऐसा नहीं होता, मतलब एक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होती है एंड उसी टेक्नोलॉजी पे हमें सारी सर्विसेज बनानी होती है। Okay, okay, yes. See, अगर हम यहाँ पे एक बात कहें, I just want to show you this, like माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर हम लोग कहीं पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? इट्स नॉट ऑन बैक एंड, फ्रंट एंड में भी हम लोग का डिफरेंट माइक्रो सर्विस हो सकता है। माइक्रो सर्विस क्या है? टू ब्रेक योर एप्लीकेशन इन मॉड्यूलर वाइज, इन मॉड्यूल्स वाइज। लाइक जैसे तुमने कहा कि फॉर लॉग इन हम लोग एक अलग माइक्रो सर्विस बना लेंगे, फॉर रजिस्ट्रेशन वो अलग होगा, यूजर का अगर कोई डेटा शो करना वो अलग होगा, ठीक है? यूजर का कोई ट्रांजेक्शन हो रहा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो एक डायग्राम में दिया गया कि देर इज वन ऐप, तो ये अलग एक माइक्रो सर्विस होगा जो अपने अलग से काम करेगा। देन एक पोस्ट फीचर है, पोस्ट पर हम कोई पोस्ट करते हैं तो ये एक अलग सर्विस होगा। सर्विस कहने का मतलब है ये एक तरह का अलग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होगा, अलग तरह से ये एप्लीकेशन पूरा रन करेगा। हाँ, इसे हम लोग क्लाउड के मदद से इस तरह से इसे डेवलप करेंगे कि कब क्या क्या कैसे हो रहा है वो हम लोग थोड़ा सा मेंटेन कर पाए, वो हम लोग के सारा बाइंडेड रहेगा। लेकिन इंटरनली ये जो मेरा ये एप्लीकेशन है, अगर हम सिंपल एक पोस्ट और कमेंट का बात करें तो मेरा फ्रंट एंड एक डिफरेंट सर्विस होगा, मैंने अलग एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। पोस्ट एक अलग एप्लीकेशन होगा, देन एक कमेंट का फीचर होगा जो एक अलग एप्लीकेशन होगा।
इसका कोड अलग होगा, लैंग्वेज अलग हो सकता है, डेटाबेस अलग हो सकता है, और वो रन भी अलग तरफ करेगा, अलग जगह करेगा, उसका स्पेस हम लोग अलग रख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, इन ओल्डर टाइम व्हेन वी यूज्ड टू राइट एवरी कोड एट वन प्लेस, हम लोग सारा चीज एक कोड एक जगह लिख लेते थे। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि सपोज हम लोग कोड लिख रहे हैं एंड मैंने कुछ कोड कमेंट किया और कस्टम ने भी एक कोड कमेंट किया, कस्टम का कोड सही था, मेरे कोड में एरर हो गया। जैसे ही वो एरर हो गया, इट विल ब्रेक द होल सर्वर। सर्वर ब्रेक होने की वजह से क्या होता था कि वो सारा एप्लीकेशन गिर जाता था। ओल्डर टाइम आप लोग को अगर याद हो, हम लोग के टाइम में होता था कि जब जैसे ही कोई रिजल्ट आउट हुआ, सर्वर हैंग हो गया, जैसे ही कोई प्रेशर पड़ता था सर्वर पे, सर्वर गिर जाता था। या तो फिर कभी कदर क्या होता था, बोलते थे अरे आज सर बैंक में ही बैंक वाला बोलता था अरे आज सर्वर गिर गया है, आज सर्वर गिर गया, कोई काम नहीं होगा, अब 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 5 घंटे के बाद आइए। तो उस समय क्या होता था कि अब डेवलपर के पास ये जाता था कि अरे ये एरर आया, जल्दी ठीक करो। तो तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए नेटफ्लिक्स ने एक 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 फंडामेंट निकाला। एक्चुअली माइक्रो सर्विस का पहले से ही था, लेकिन नेटफ्लिक्स का सही से इम्प्लीमेंट करने वाला कंपनी था। तो व्हाट दे डिड, उसका उसका डिफरेंट डिफरेंट वीडियो चलता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन चलता है। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट चीज को वो अलग अलग एक सर्विस बना करके रन कराया। अब उससे फायदा क्या हुआ, सपोज मैंने कस्टम ने पोस्ट में कमेंट किया, मैंने 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 क्या किया, कमेंट में मैंने अपना कोड डाला, मेरे तरफ से एरर हो गया है कमेंट वाले में, लेकिन ये पूरा एप्लीकेशन, उससे क्या होगा कि ये जो लिंकेज है एक पोस्ट का, पोस्ट हम लोग देख पाएंगे लेकिन वो कमेंट नहीं कर पाएंगे उसमें, बिकॉज कमेंट हैज एन एरर। अदर देन दिस द होल एप्लीकेशन विल वर्क एज इट इज, अनलेस उसका जो मेन एप्लीकेशन है, जो उसको स्टार्ट करेगा वो ना गिर जाए। तो अगर बीच में कोई भी अगर फीचर ब्रांच अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इट विल नॉट इम्पैक्ट द होल एप्लीकेशन। ओके, जैसे फेसबुक में ही, फेसबुक अगर मान लीजिए आपका मैसेंजर वाला ही अगर कोई एरर आ जाएगा, उसका फेसबुक काम करेगा, पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट देख सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मैसेज कुछ देर के लिए करना बंद कर देंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि कंपनी जो हुआ वो एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से मूव कर करके लास्ट 10 इयर्स में वो लोग जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, वो लोग क्या करने लगे, वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करने लगे। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो एक पर्टिकुलर चीज पे होगा। अभी ये जो 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा 500 सर्विस चलता है, 500 500, ठीक है। तो कि कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक पर्टिकुलर ही सर्विस में प्रॉब्लम होगा, एक पर्टिकुलर टीम उसके लिए असाइन कर दिया गया जो उस पर काम करेगा। अब इसका फायदा ये रहा, नुकसान है कि आपको टीम बड़ा करना पड़ेगा। पहले आप जो काम आपका 10 20 50 टीम करते थे, अब वो 500 टीम मिलके करेंगे, ठीक है। और एक बात, जैसा कस्तव ने बोला कि सर मैं तो सर यहाँ पे आपने सर जावा पे काम करवा रहे हैं, आप इस पे .NET पे काम करवाए थे तो क्या होता। कोई बात नहीं, पहले जब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता था, तो सपोज आपका एप्लीकेशन है बहुत बड़ा, ठीक है, जैसा फेसबुक आपको पता होगा पहले PHP में लिखा गया था, ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी टाइम लगा। फिर उसने रिएक्ट में कहीं पे डाला, कहीं कुछ डाला, कहीं ये डाल डुल के उन लोगों ने, अब धीरे धीरे लोग ट्रांसफर होते होते अब जाके वो ट्रांसफर हुए। लेकिन अगर कोई आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में अगर कोई होता, तो सपोज ये एक पोस्ट का सर्विस है जो किसी ने नोड में लिख दिया, ठीक है। अब बाद में पता चला कि नहीं नहीं नहीं, ये पोस्ट का सर्विस जो था, अब नोट की जगह एक नया लैंग्वेज आ गया है जो कि पोस्ट बहुत अच्छा करता है, उसमें जितना भी पोस्ट करोगे वो सर्वर पे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कि नोट जेएस में प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या करें। पुराने टाइम में क्या होता कि उसको चेंज करने के लिए पूरा आर्किटेक्ट, पूरा सर्वर, हर चीज को चेंज करना पड़ता। इस अभी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट होने से क्या हुआ कि we will only make change to this place, and secondly ये सर्विस आपका किस में रन कर रहा है वो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज ये स्टैंड अलोन एक अलग सर्विस के तरह, एक अलग एप्लीकेशन के तरह रन हो रहा है, ठीक है। आपका जस्ट डेटा यहाँ से जा रहा है और यहाँ से इसको डेटा ले रहा है, ये बीच का कम्युनिकेशन है। अब इसके अंदर का डेटाबेस भी हो सकता है कि कमेंट के लिए हम अलग डेटाबेस यूज करें और पोस्ट के लिए हम अलग डेटाबेस यूज करें।
तो ना हम लोग अंदर का डेटाबेस देख सकते हैं, ना हम लोग अंदर से कोई काम कर सकते हैं। ठीक, अब उसके अंदर अंदर में भी अलग अलग सर्विस होगा, तो ये पूरा पोस्ट एकदम अलग से काम कर रहा है। और इसमें आप जो लैंग्वेज दीजिए, आपको आज अगर नोड.जेएस में बनाया है, कल उसको आप डॉटनेट में बना दिए, तो आपको जस्ट ये छोटा सा सर्वर का ही कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, छोटा सा कुछ इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉलेशन कोई प्रॉब्लम भी आ गया, तो प्रॉब्लम बस ये पोस्ट के लिए होगा, ना कि पूरा एप्लीकेशन के लिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, वो लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से जा करके अपना माइक्रो सर्विस की तरफ टर्न लेना स्टार्ट किया। हाँ স্যার यस, हाँ टेल मी। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সাপোজ ধরুন আপনার আপনার ফ্রন্ট এন্ডটা আপনার একটা সার্ভিসে হোস্ট করা আছে মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচারে, ব্যাক এন্ডের আপনার নোড জেএস আর এক্সপ্রেস জেএস এক জায়গায় হোস্ট করা আছে। তো আপনি ফ্রন্ট মানে যে ইউজার সে ফ্রন্ট এন্ডটা দেখতে পাচ্ছে, সেখানে কিছু কিছু ডেটা দিল, ডেটা দিয়ে পোস্ট করলো, ঠিক আছে। এবার ব্যাক এন্ডের যে সার্ভিসটা ওটা আরেকটা মাইক্রো সার্ভিস আর্কিটেকচার মানে আরেকটা মাইক্রো সার্ভিস ওটা হোস্ট করছে, ওখানে কিছু প্রবলেম হলো, ঠিক আছে। কিন্তু যে মানে এন্ড ইউজার সে ওই যে ফ্রন্ট এন্ডটা দেখতে মানে ফ্রন্ট এন্ডের জায়গাটা তো ঠিক আছে, সে ফ্রন্ট এন্ডের জায়গাটা দেখতে পেলো এবং দেখতে ডেটা পোস্ট হওয়ার পরে একটা এরর আসছে। তো ডেভেলপারের কাছে যখন রিকোয়েস্টটা যখন রাউট করলো, যখন যে মানে এই জায়গাটা ভুল আছে, মানে তার ব্যাক এন্ডে যে এক্সপ্রেস জেএস বা নোড জেএস যেখানে লেখা আছে সেখানে ডেটাটা প্রসেস হচ্ছে না ঠিকঠাক মতন, তো তাহলে মানে এই জায়গার জন্য যে রেসপন্সিবল মানে সেই সার্ভিসটা যে দেখছে, তাকে শুধু ওইটুকু জায়গা দেখতে দেওয়া হলো, মানে এন্টায়ার প্রজেক্টটা আবার নতুন করে তৈরি করে এই ঠিকঠাক এই সব ব্যাপারটাতে থাকে না। না না, পুরো পুরো প্রজেক্ট দেখতে হবে না, তাই জন্য তো এর জন্য কি হয় কি একটা স্পেসিফিক মডিউলের জন্য একটা স্পেসিফিক টিম থাকে, ঠিক আছে। আর এটা লগ ফগ দেখে মানে মানে এটাকে ম্যানেজ, এই মাইক্রো সার্ভিসটা জেনারেলি বড় প্রজেক্টে ইউজ হয়, তো তাই জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট মডিউল লিড হয়, তার তার মেন ওয়ার্ক হয় কি এইসব জিনিসটা দেখা কি ওদের মডিউলে কোনো ইস্যু আসছে কিনা। তাই জন্য একটা সেন্ট্রাল লগ থাকে, ঠিক আছে, সেন্ট্রালাইজ লগ থাকে, মানে কি যেখানে তুমি কোনো ইস্যু হলে তুমি তুমি কিছু লগ করতে পারো, ঠিক আছে। আর তার জন্য আমরা কি করি, লগ যখন এরর হলে মডিউল নেম দিয়ে আমরা লগ করে দিই, ঠিক আছে। মিন লগ মডিউল নেম পোস্ট পোস্ট এই হচ্ছে কমেন্ট এই হচ্ছে যখন কোনো লগ কোনো এরর আসলে আমরা দেখে যাব, মানে ওই লগ থেকে আমরা জেনে যাব। ওর যে ম্যানেজার, যে হায়ার লেভেল ম্যানেজার যে পুরো জিনিসটাকে মেনটেন করে, যার জবটাই এটাই আছে কি ও এইসব জিনিসটাকে দেখো কি সার্ভার ঠিক আছে কিনা, এইসব ঠিক আছে কিনা। তো ও দেখবে কি আচ্ছা ঠিক আছে, ইস্যু আসছে পোস্ট থেকে, পোস্টে একটা এরর এসেছে। তাই জন্য ডিফারেন্ট কোম্পানির ডিফারেন্ট পলিসি আছে। কোনো কোম্পানি এ নিয়ে একটা টিকিট রেস করে দেবে, টিকিট ওই টিকিটে দেখবে আচ্ছা এই মেসেজ আসছে, ওই রেসপেক্টিভ মডিউল লিডকে সঙ্গে কথা বলবে কি আচ্ছা তোমার এই প্রজেক্টে এই মডিউলে এরকম ইস্যু আসছে। না হলে डायरेक्ट कम्युनिकेशन ওই মানে डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो जाता है कि people will say okay your this module have this error, please see this thing. So in this way what happen, your the issue will go to the proper team, okay. Like there are 1,000 people, and since the module is small, so people can work very easily and able to understand those things and fix those things easily, okay. अच्छा, ये तो क्या बेनिफिट हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ माइक्रो सर्विस का? अच्छा, माइक्रो सर्विस एक्चुअली इतना एडवांस क्यों हो गया? ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस क्लाउड आने की वजह से इट इट गिव अ गुड कंसेप्ट, अ वेरी मैंने कि जितना भी माइक्रो सर्विस का जो कंसेप्ट था, क्लाउड हैज इम्प्लीमेंटेड दोस थिंग, and with the help of a cloud services, they have different services, we could able to run our application properly, okay. अच्छा, ये तो इसका बेनिफिट्स है, इसका इसका बैकड्रॉप भी बहुत ज्यादा है। बैकड्रॉप क्या है कि जहां आपका 50 आदमी मिलकर काम करता था इन प्रोजेक्ट्स, आज से 5 साल पहले जो कि मोनोलिथिक में था, 50 आदमी मिलकर काम हो जाता था कि आपका 20-25 आपका 10 आपका फ्रंट एंड में है, 10 आपका बैक एंड में है, 10 इस तरह का मैनेजर है, 10 आपका डीबीए है, 10 सर्वर देख रहा है, आपका काम खत्म हो जाता था, ठीक है। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ दिस माइक्रो सर्विसेज आपको बड़ा टीम मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि
अब तो वो एक प्रोजेक्ट नहीं है, अब तो वो आपका 20 प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। उसके लिए डेटाबेस अलग हो गया, कुछ नोड में चल रहा है, कुछ डॉटनेट में चल रहा है, कोई जावा में चल रहा है, कुछ पार्ट पार्ट अलग अलग है। आपका फ्रंट एंड में भी कुछ फ्रंट एंड आपका रिएक्ट में चल रहा है, कुछ एंगुलर में चल रहा है, कुछ आपका व्यू जेएस में चल रहा है, कुछ जेक्वेरी में चल रहा है, ठीक है। तो सो ड्यू टू दिस थिंग मीन जनरली ये एक तरह का बर्डन भी दे दिया है टू टू द प्रोजेक्ट ओनर टू यूज दिस थिंग। और अच्छा चीज यूज करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जैसे पैसा मैंने कि बड़ा प्रोजेक्ट में ही ज्यादातर माइक्रो सर्विसेज यूज होता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट में अभी भी मोनोलिथिक में चल जाता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ HTML. Like what is HTML and why we use? So HTML is nothing but a basic building block of a web. So website का जो building block होता है, mean how this website has been built, mean it used to build through this HTML. अगर हम सिंपल भाषा में बोले, बिल्डिंग का जो पिलर होता है, पिलर इज योर HTML, ठीक है। पिलर और ढलाई जो होता है, छत जो होता है, ये आपका HTML है, क्योंकि यही आपका डिटरमाइन करेगा कि आपका वेबसाइट किस बिल्डिंग किस तरह का होगा। तो सिमिलरली आपका किसी भी वेबसाइट में हाउ योर वेबसाइट विल बी that is determined somehow determined by this HTML. I will not say fully, but yeah, somewhat that is determined by this HTML. Okay, तो जब whenever you do any development you are in front end, तो आपको जनरली क्या होता है, आपको इधर कुछ कहीं पे कुछ इमेज देते हैं छोटा मोटा में, लेकिन अभी क्या फिग्मा डायग्राम, एक फिग्मा डायग्राम दे देंगे जिसमें हर चीज लिखा होगा कि आपका विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, कितना पिक्सल का आपको इमेज यूज करना है, क्या फॉन्ट यूज करना है, कैसे किधर आएगा, क्या ये आएगा, एवरीथिंग। मोबाइल में कैसा भी होगा, डेस्कटॉप में कैसा भी होगा, तो ऑल काइंड ऑफ दोस थिंग आपको मिलेगा। एंड you have to create your HTML first before implementing anything. आपका वेबसाइट बनाने से पहले, अगर आप फ्रंट एंड में आपको पहले आपको तो उसका HTML बनाना पड़ेगा। HTML बना करके देन उसमें CSS का इम्प्लीमेंट कर करके, जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंट कर करके देन यू डू एनीथिंग। बट स्टार्टिंग पॉइंट आपको एक फिग्मा मिल जाएगा, एक डिजाइन मिल जाएगा, देन यू हैव टू डू दिस। सो HTML is your most basic building block for your websites. Okay, तो बिना इसका आपका कोई वेबसाइट नहीं बन सकता। ओके, आर एवरीवन गुड विद दिस? यस सर। ओके, तो कुछ टैग्स है, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे ये सारा चीज। कुछ टैग है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे हेड, टाइटल, बॉडी, हेडर, फुटर, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो एक एक करके पीछे आएंगे क्या है नहीं है। तो जनरली आप जब भी कभी HTML लिखते हैं, HTML should have these two tags. Okay, it should be inside this tag. Like कोई भी आप टैग्स लिखते हैं, टाइटल, राइट, asides, ऑडियो, वीडियो, हेड, तो it should be inside this two bracket. Now एक कंफ्यूजन आता है लोग कि भाई इसके अंदर हम लोग क्या कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है कि कैमल केस है? एनीबडी नो कि हम लोग जो टैग्स लिखते हैं HTML का, वो कौन सा केस फॉलो करता है, कैपिटल, स्मॉल और कैमल? और व्हाट विल हैपन इफ आई राइट दिस टू वे? एनीबडी हैव दिस आंसर कि हम लोग कोई भी अगर हम HTML टैग लिखेंगे तो विच केस विच शुड फॉलो, मीन अपर केस, लोअर केस और मिक्स केस? और इवन इफ यू डू दैट थिंग, व्हाट शुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ दिस थिंग? क्या इशू आ सकता है, नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? आप लोगों ने HTML लिखा है ना, HTML As I head, know, body. as I know that it will follow the small case. Okay. So if you write in title the uppercase or the proper case, okay, it will generate an error. Okay, you are saying you should follow the small case, but if we write in upper case, it will give an error. Okay. Anybody else want to answer this thing in different way? सर यूजुअली HTML सर केस इंसेंसिटिव होता है, बेस्ट प्रैक्टिस Okay. स्मॉल में ही बोला जाता है, बट कैपिटल लिखने में कोई इशू नहीं है। Correct.
So yeah, I mean, प्लीज आप लोग जो आंसर दे प्लीज नाम बता दे, ठीक है? So yes, Yes, sir. I'm in HTML. line. Okay, the HTML is case insensitive because अगर आप कैपिटल भी देंगे काम करेगा, स्मॉल भी देंगे काम करेगा, मिक्स भी देंगे काम करेगा. बट फॉर HTML it is always advisable to use the lower case, क्योंकि क्या किया गया है कि कुछ केस को भी किसी लैंग्वेज के साथ आपका टैग कर दिया गया है, ठीक है? लाइक फॉर रिएक्ट जेएस वी यूज कैपिटल केस, राइट? जब हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, वी क्रिएट अ कंपोनेंट, इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर. तो इस तरह से डिफरेंशिएट करने के लिए वो लोग कैपिटल ले लिए और एचटीएमएल को बोला गया कि आप हमेशा लोअर केस में यूज करें. एक्चुअली एचटीएमएल फ्रॉम बिगिनिंग इट यूज द लोअर केस, but it has been designed in such a way like it can work with any cases, capital, small, or mixed, but it is advisable to use only the lower cases. It won't give any error. Meanwhile compilation, browser will itself compile it to the lower case. Okay, it won't have any issue. But with the advance of React used capital letter for their component. Hence, it is advisable for the developer to use the small letter only. Why? See, for HTML I use a small letter, and for React component I use a capital letter. So by seeing this case only, I can able to identify, okay, this is a HTML tag and this is a React component. Okay, and if you don't follow this thing, then people may get confused. क्या रे ये React का component है या फिर ये HTML का ही tag है? Because new tags are coming, right? So so to discard that problem, एडवाइस किया गया है कि आप हमेशा HTML को लोअर केस में ही लिखें. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, आप लोग विजुअल कोड सारे के मशीन में विजुअल कोड इंस्टॉल है, VS कोड? Yes, sir. Yes, sir. Anyone who don't have VS code in his machine? कोई है जिनके VS कोड नहीं है? You can say yes or no. अच्छा, तो सारे के पास विजुअल कोड है. चलिए, हम फॉर डेवलपमेंट आई विल यूज विजुअल कोड एज माय एडिटर. ओके, किसी के पास नहीं है तो he or she can install VS code from this. VS code. Sir, will I generate a simple application? Because last one application was the React application. So in here, do I need to create a separate application? Yeah, yes. Yeah, you should create a separate application because it will use everything. It will use multiple things. Okay. Okay, I think what happened. Okay, it started the download when I click here. Okay, so you have to come here and then click here. It start the download and then you have to install this. Okay, जिसके पास नहीं है प्लीज इंस्टॉल कर ले. अच्छा, HTML के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. HTML का पहला क्लास इसमें. HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, can any one of you can write a basic structure of HTML for me? I need a volunteer. I just want this structure from any one of you to he or she can write in his laptop. So Kastav, can you do it for me? Which one, sir? Share your screen and write a hello world. Create an HTML and write hello world in it. Okay. That's all. Okay.
Okay, I am stop sharing for my. Yeah, see, I need a volunteer from you, from your end also. Okay, so everyone should do something, right? कुछ ना कुछ सबको करना होगा अभी. Then what happen? हम लोग सही से ये चीज को कर पाएंगे और सही से जान पाएंगे, ठीक है. एल्स आपके पास यूट्यूब का बहुत सारा वीडियो है, आप यूट्यूब में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा. और मुझको को तो कुछ नहीं आता है, मुझसे बढ़िया बढ़िया लोग हैं, आराम से आप लोग वहां से देख के सीख सकते हैं. बट व्हाट आई वांट कि आप लोगों को आना चाहिए. वॉट एवर यू आर डूइंग, यू शुड नो हाउ टू डू इट. तो कस्तव, if you can't start your laptop, anybody else, I just want hello world in HTML. How we write hello world in HTML? Okay, can I write this in a notepad, sir? Anywhere, anywhere. Okay. 1 minute. Yeah, you're not sharing your screen. Yes. Sharing my screen is shared screen. 1 minute. Yes. Now can you see my screen, sir? Yes, it is visible now. Okay. Okay. Anybody else has VS Code in his laptop, and can he or she open that? Great. I am saving it with .html. Okay. Okay, in my desktop, so that it will be good for everyone. Okay. Okay. Great. Okay. Okay. Great. Yeah. Great. So you can stop sharing. I want second volunteer to do this thing in VS Code. Anybody else? Izaj, Lakshmi, Avesh. Yeah, can I share my screen? Yes, yes. Mm, yeah. Is it visible? Yes, it is visible. Yes. HTML. Okay. I need third volunteer who could help Izaj to create this thing in 2 seconds. Any third volunteer who could help Izaj to create this thing in 2 to 5 seconds. Anybody else knows any shortcut to create a HTML basics Yes, sir. structure? Yeah. Yes, so there How? is a one shorthand snippet. Just type exclamation mark and then enter. You can get the snippet of that. Yeah. Type exclamation sign. Then press enter. Okay. Bingo. Okay.
So Then how long it took? Just a few seconds. Just a few seconds. Okay. what we did, It that just explain that to Kasto. I think you explain that to Kasto. Yes. Okay, just when you open the Visual Studio Code, just type exclamation mark and then press enter. You will get the snippet of the basic structure of HTML file. Just an exclamation mark and then enter. Uh, when you can you do it again, Igaj? I will Yes, I can. give Like explanation sign. just give a And the exclamation first sign. thing, emit abbreviation, you have Hmm. to, it will automatically select that. So you just have to press enter. Okay. Hmm. If you don't get an option for this, uh, click on some other place. No, 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 not there. I mean, on the screen. Yeah. Press exclamation sign and yeah. No, let me share my screen. Okay. Then again, I will need some more volunteer. Okay. I am taking the control and again Yeah, sharing my yeah. screen. I had to stop. See why I am doing this to make this class interactive, and in this way we will learn from it, each other. Okay. So whenever we give an exclamation sign, see we get to know like some snippet are getting created, and if we hover here, we get to know like what snippet this sign will create. Okay. Even if we don't want that, even somehow if we don't get an option for that, I'm not getting an option right now, right? What do you have to do? What do you have to do? Uh, Control space. Okay. If you don't get an option, press control space. Control space again. What it will do? It will reappear this options. Okay. If you don't get an option, press control space. Okay, and then enter. It will again create that snippet. Okay. So now we are able to know like how we can create a snippet that usually take 1 minute in Hmm. 1 second, right? Now I am giving control to Ijaz only. So Ijaz, please share your screen again and show this in browser. I am stop sharing my screen. Yes. No. Yeah. Inside body. Right. Hello world. Body tag. Right. Hello world. Okay. And show it in save it and show it in browser. We can run it from here, right? Do it. See, I'm learning from you. Okay. 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 Okay, this is the thing. So you did in this way, it able to run and it ran on the different browser. Okay. Hmm. Uh, go to your code again. No, don't. Okay. Give another tag. Give another paragraph and write something else. Okay. Anything. Okay. Okay. Again, if you want to see that, what you will do? Again, you have to run, right? Hmm. Okay. Anybody know anything else we can do? we Any can better way? just refresh. We can just refresh the browser page, then it will be appear the modified code also. Okay, 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 okay. Go to the So browser page and reload the browser page. Just I had crossed it. Wait. okay, okay. So there is one extension. Okay, there is one extension which is better than this. If you are doing designing, okay. Hmm. So what you have to do? You have to go to the browser and again you have to
refresh this again, right? Hmm. So we don't need to do that thing. We have to install one dependency that is called uh, HTML preview. Type HTML HTML. space preview. PREV. Yeah, second one. This one. Yes, install it. See on left side, you will see on leftmost side of your VS Code. Sorry, rightmost side you will see there is only one option like book, right? Once it get Hmm. installed, you will get another option. Let me share my screen. Okay, we are here. See, I I got this option. Okay, open preview. What it will do whenever I click here, I get what it is here, Hmm. right? And why I did that for designing? For designing, this is very helpful. Why? Because I will type anything. See, with my type, I can see how my design is working, right? Is it good? Yes, we can keep a track of what we are doing Yep. in real time. In real time, whatever we will do, we don't have to refresh, and it is on in our right side. We can check and do whatever thing. We don't have to go there, refresh our page and do anything else. Okay. If I want to have a break there, I can simply come here, check two things side by side, and it will work. I don't have to refresh. I don't have to save the page also. So we are good with this two thing. Yes, it's clear. Yes. So okay. Ah, now let's move forward. Okay. Okay. We have. Okay. Yeah. So by default, if I don't do anything by default, what happened? Uh, in snippet, I get this code. Okay. Every one of you, do you know what does this line 1 to 11 tell us, or why, or and for which utility we use which line? Like what is the use of this doc type? What is the use of this lang eng? What is the use of this meta head body HTML? Can anybody be volunteer with this also, so Doc that type we will able to understand everything? doc type HTML actually we are using to distinguish it for as a plain HTML and with the HTML5. Okay. Okay, good. And HTML then language yen is actually stands for English. Okay, so we are inputting the English language in our body or head, whatever we are using. It's the main thing. Meta yeah, actually we use as for the metadata. Okay, no, actually meta tag we use. no, Suppose you we miss have the this thing. Yeah, you miss this thing head. head. Okay, head portion actually whatever the data we actually want to keep it in the HTML head portion. This tag actually stands for this. Okay. So inside, like the title, okay, in the browser title, okay, we actually keep it on the head section. So it's under the head. And the meta tag we generally use. Suppose there is a context of SEO. Okay, if someone knows. So whenever we are actually promoting our websites or we are actually controlling the traffic of the websites, okay, this meta tags actually help us to actually those who are actually the SEO person, those person actually work with the meta tags. Okay, who can the control of No, the traffic of no, the no, no, website? no, no, no. See.
This thing does not have anything to do with SEO. Okay, this to meta tag does not do anything with the SEO. So there is nothing for the SEO for this to meta tag. Okay, okay, go forward for title. The title is the particular component, the particular tag in a HTML page, which actually display the browser title. Okay, so whatever actually we will write inside the title tag, it will be shows under the browser title. Okay, okay, And what is okay. HTML body? Yeah. So anybody else can give his or his view. I again say, irrespective to any language, Bangla, Hindi, Tamil, Telugu, I don't want anything. I mean, if you want to speak, just speak, even if it's right or wrong. Okay. Why what is the utility of this line? I mean, this thing, line 1 to 12. Okay. 1 to 11. Why we use this thing? And and some description, like what does this thing do? Okay. Anybody else can uh, flash a light on it, can throw some light on it, so that I could also understand like why we are using this thing. Any other volunteer, please? Bolia, don't shy. uh, अकेले है क्या? Prastav, I think. Okay. Very less people. Okay. So as Kesto said, this doc type is to identify like what kind of document it is. It is an HTML document, so it tell the browser, right, the document which you got is an HTML document. Uh, Now the browser become very powerful. So if you don't give this also, they will able to understand. Okay, it's an HTML document, but ideally we should provide this. As Casto said, this lang tell the browser like our website, the language which I had used in the website is a English language website. So this website has been built on English language. If it was if my website mean was in Japanese language, then I have to give JP. Okay, JP stand for Japanese, French for FR. So this word tell the browser like this website has been totally built on English language. So what it will do, if they get some text or something, it will it will try to convert that while compilation. It will try to convert those into the English text only. Okay. Now in head, this section, the head section, we generally don't see in our website. Okay, we don't see the head section. You can see it is totally blank here. What we see after, I mean after head section, the body section which we see. But why we use this? They are used for different purpose. What are the purpose? One purpose, Custos told, like inside head we give uh, the descriptions of our website which are helpful for search engine optimization. Mean if we search anything in with any word, what happened when I search VS Code, download VS Code, I got this thing, right? And if you see this thing, this code, these words are there somewhere in this website meta tag. That's why when we search with this word, it, the Google point to this website, take us to this website, or show us the option for this website. How it able to do that thing? Because inside this the another meta tag which I will explain you later on, they have given some kind of description which is matching with my text. Okay, so we give this meta tag for search engine optimization friendly, to make our website search engine optimization friendly, so that if somebody search for something, some text, uh,
and and we provide that text in our meta tag, then it will bring my website result nearer, mean first. Okay, so everybody want their website to be in in first place. So how we can do that thing? Through this search engine optimization. Other than this, if we want to add any uh, outside CSS, okay, whether it's a outside CSS or a JavaScript, then we have to include those in our head tag. Then the fab icon mean the icons of your main website, like this Skype symbols, okay, or for GitHub, this GitHub sign. This is the fab icon which we used to see on our browser tabs. So this also we can set uh, in our head tag of your HTML. And last, this title, we can set the titles as well. Now I uh, now again here we see two things. This car set UTF-8. Anybody have any knowledge about this car set UTF-8? Like what it is? No. Okay. See, this car set UTF-8 mean it tell us the character which we are using. The character mean A, B, C, this number, this exclamation sign, any character which we will use in our website, it will follow this UTF-8 policy. What it called? Mean there is policy, I would say policy. Okay, so similar to that, there are multiple car set which we can use. So this generally in any website you see this car set 8. So it has all the character. I mean, inside this it has all the character uh, which generally contain in most of the common languages like English, French, Japanese, all those languages. Whatever character they use on those languages, those languages are recognizable, okay, by this UTF-8. Instead of UTF-8, if I use some other car set, you will see a few character which are there on that language would not be recognizable. I will explain you later on. And this viewpoint tell us like how you want to view your website. Okay, here what we have given width equal to device width. So this word, this meta tag provide you the view of your website. I mean, whatever the width of your website, it will your website will become as per that width. Hence, we give this thing. Okay. And regarding this body, so whatever thing we write in a HTML, we write inside of the body. Okay, let's move forward to next thing. What I did. Okay. Hmm. What difference did you see here from the first example? What I did, I added. Now went to I would say SEO kind of thing, right? In SEO, what I did for this page, I given some content like Technophile Firdous. It could be your main websites and some description. Inside description, I gave this content, right? What will happen with this? So whenever this page would be on website and uh, the Google search engine robot will try to see like what kind of word this website content. Okay, and if they find this meta tag description content and this kind of thing, it will add it into it search engine. And when some person search with this kind of word, it will give your website results.
So why when I search with VS Code download, this website comes because in their meta tag description they must have mentioned those kind of words. Okay, we are good. Uh, Anybody here? I can see 5%. No reply, silence. Okay, okay, okay. Now let's go to the second thing. Why we use UTF-8? Why we use this car set? Let me show you that examples also. Okay. If I use some other uh, car set like this ISO 8819, what it will do? Let me. Now you can see on right side this word is on Japanese language. Okay, and if I change this car set to UTF ISO 8851, and if I go to my open this page in browser, what happened? I have done one mistake. Okay, and I go there, go to this page. Okay, now you can see if I change the UTF to one ISO one car set to ISO one sorry 8895, it changed that Japanese language like this. Let me show you again. Okay, now when I reload this page, it become a Japanese language, the language which I have, the text which I have provided here. It did not change the text to anything else because this UTF-8 able to identify this character set, and it keep it as it is. But this ISO 8895 don't identify the Latin character, that is the Japanese is also one of the Latin character language, and it does not identify those kind of characters. So what happened when we use this kind of character, and in website and in our HTML page we don't टेल हम लोग नहीं बोले कि अच्छा ये तरह का मेरा वेबसाइट में कैरेक्टर हो सकता है, तो इंस्टेड ऑफ making this website to understand this language Japanese language, it try to uh, change it to the nearest language that is in ISO 8. So ये सारी चीज के लिए ये मेटा टैग यूज होता है, और डिफरेंट तरीके का हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेटा टैग और भी है जो आपका यहाँ पे फेसबुक का मिलता है ओजी करके, इमेज भी हम लोग दिखा सकते हैं मेटा टैग के थ्रू। देन हम लोग इसके अंदर जैसा आपको पहले कहा कि हम लोग HTML लगा सकते हैं, CSS लगा सकते हैं, और वन थिंग, आप किसी अच्छा वेबसाइट में जब जाएंगे, दिस लोगो विल आल्सो गेट चेंज बेस्ड ऑन टैब, बेस्ड ऑन वेब, मैंने कि आपका मोबाइल्स में अलग दिखता है और आपका डेस्कटॉप में अलग दिखेगा, लैपटॉप में अलग दिखेगा, बड़े लैपटॉप में अलग दिखेगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन गिव द साइज कि भाई टच एप्पल टच में क्या दिख रहा है, ये मेरा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा इस साइज जो होगा उसमें ये दिखेगा, ये मेरा इसमें ये दिखेगा और कॉमन ये दिखेगा। इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपका टाइटल टैग, और इस तरह से हम लोग इस डिस्क्रिप्शन दे करके जो आपका एसईओ में हेल्प कर सकता है। ओके, चलिए, तो हम लोग का बेसिक एचटीएमएल हो गया, बेसिक एचटीएमएल समझ गए। हम लोगों ने टॉप का पोर्शन समझ गया कि हम लोग हेड में क्या रख सकते हैं, हम लोग लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, कार सेट क्यों यूज कर सकते हैं, मेटा क्यों यूज कर सकते हैं, कैसे इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे इस तरह से वेबसाइट आपका चेंज होगा। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन?
Sir, Yes, yes. yes. Can you go to the HTML page? Hmm. Please go to the VS Code HTML pages. In the head section, okay, whatever actually you have described that the meta name, okay, and description, we use meta name and content. We use it for the search for Search the engine. SEO purpose. But Yes. meta name viewport content with device with initial scale 1.8. Can you please repeat it? That why we use this? Yeah, yeah. This what it will do, it will take the width of your device, whatever device you have, it will take that width. Okay, this content, this HTML content will be in that width only. I think if Okay. you do more search, then we can give some padding, those kind of thing also we can add with this meta tag. Okay, with this width tag. But generally, Like whenever you're using whenever you are actually opening this web page in your mobile, and whenever Mhm, you are opening this web page in a tab, it will mhm. adjust it according to the screen size. Yeah, it will adjust it according to the screen size. Okay. Okay, and this you can add this rel also, mean the fab icon also. uh, Based on the size you can change your fab icons also. Okay, like this icons, if you want a separate icons for the Skype, for your mobile desktop and this, so you can do it like this. So I have commented that, but it could be done through this also. Okay. Okay. And regarding this, you don't have any issue, right? Why we use this? So it allows you to write different character. Okay, from the set of the rule which has been defined in this place. Okay, so only those character can be shown in your website, right? Okay. Now let's move forward and do some designing. Do some do something else. Okay. Why? wh- Uh, uh, do you remember some of the tag? Can you tell me some of the tags and why we use those? Kastav, do you remember any tags that we can use in HTML? Few tags them. HTML. Yes. Till now we know how do we write the basics, right? And then why we use these kind of heads and all those things. Now let's move forward to the third thing. Like if you want to show anything in, I would say, in a, I mean how we can use link in our application in HTML. It's a very simple thing. Like you have to give a, then the href, and then this. Let's Okay, this is nothing. This is nothing. Go to the third portion. Okay. Okay. Yeah. So as I told you earlier on, like uh, HTML give you some kind of structure to your website. Okay. Suppose this is a statement. Let me paste it here. Okay. This is one of the statement at Mozilla. At Mozilla, we are globally community of technologists thinking and building are working together. Okay, building working together. Okay, so ये अगर टेक्स्ट है और आपको कोई बोले इस टेक्स्ट को कहीं पे हम लोग शो करें, तो किस तरह का शो करने में ज्यादा बेटर लगेगा? हाउ यू विल शो दिस थिंग?
अगर मैं कहूँ कि या तो आप या कुछ भी इस तरह का अगर आपका randomly अगर आपको आप अच्छा do you have the knowledge of list, like what is list and why do we use the list? Hmm. Order list, unordered list. Order list, unordered list, Yes, anything like that? Okay. Hmm. yes. Order list is that whenever the list actually coming in numbered form. Okay, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, like that. Okay. Okay. Unordered list is that whenever actually the list comes under the bullet form. Okay. 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 See, a stable design is totally depend upon your thinking, like how you can represent this thing. Okay. So this is one sentence. What we can do, we can represent this thing based on the requirement कि किस तरह का क्या होगा, ठीक है, राइट। अगर यहाँ पे अगर मैं इसी जगह को अगर मैं यूं कर दूं, आई एम अ फ्रूट सेलर, ओके, माय शॉप हैज, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एप्पल, बनाना, कीवी, राइट। Now if I see in website, if I see inside a website, how it look like this, right? It look like this. मैं इसको ऐसा नहीं करना चाह रहा, मैं इसको चाह रहा हूँ कि नहीं ये थोड़ा सा और इंटरैक्टिव लगे। इंटरैक्टिव करने के लिए मेरे पास दो तरीका है। एक है कि भैया हम इसको डिजाइन चेंज कर दें, ये तो मेरा पहला दो लाइन है, ये दो लाइन है इस तरह का। तो आपको अगर कोई बोले कि नहीं ये इस तरह का नहीं लगना चाहिए, जैसा आपका मेन्यू में आता है या आवर मेन्यू, जिस तरह का मेन्यू में आता है या जिस तरह का इसमें आता है, आप कुछ उस तरह से करके कीजिए, ठीक है। तो हाउ यू कैन डू दैट थिंग, तो जब भी किसी अगर आपको लिस्ट में कोई अगर सामान दिखाना है, लिस्टिंग कराना है, तो यू नीड ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ओके। तो हाउ यू कैन डू दिस थिंग, इसी इसी अगर आप टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से अगर मैं लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। देखिए वर्ड तो सेम रहा, पहला ये जो यहाँ से आता है जो वर्ड जो था, ये और ये तो सेम रहा, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने से मेरा जो जो विजुअल इफेक्ट है या फिर मेरा जो देखने का ताकत है, वो ये वाला को आसान से पढ़ पा रहा है, बट नॉट दिस, राइट। अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि आप किस में आपको ये डॉट दे के करना है, किसी में आपको नंबर दे के करना है। अब इसी ये जो फ्रूट्स के लिए ही अगर हम कह सकते थे, हम इसी इसको तो फ्रूट के लिए ही, ओके, ऑर्डर लिस्ट एक दे देते हैं, क्या भैया, इधर गया, ये रहा। Hello, sir. सर, यस, Hello. Sir, some या people are unable to join this call right now. I am able to join or not the call. Let it be. No, they are here only, right? ऐसे भी अब क्लास खत्म हो They are in the जाएगा। chat but not in the call. यस 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 यस, प्लीज क्लोज स्काइप एंड जॉइन, ओके, चलिए यही कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फर्क क्या रहा है कि कभी कोई अगर आप लिस्ट बनाएंगे, ओके, यू आर डूइंग लिस्टिंग, बोथ आर डूइंग ऑलमोस्ट द सेम थिंग। जैसा कस्तो ने कहा कि अनऑर्डर लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में यूएल में देयर विल नॉट बी एनी नंबर, ऑर्डर लिस्ट में देयर विल बी अ नंबर, ओके। थर्ड पार्ट आते हैं HTML में, how you can add CSS in HTML. Anybody have knowledge for this? How you can add
CSS and JavaScript in HTML? Do you have knowledge for this? How we can add CSS and HTML in JavaScript? Sorry, in HTML. How we can add CSS and JavaScript in HTML? Yes, sir. In the style tag, one thing, it's an, sir, Yes. it is an inline CSS. Yeah. So let me explain this. Okay. कल फिर मैं सबको रिवाइज करूंगा पर जल्दी से इसे खत्म करता हूँ क्योंकि इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा, ठीक है। तो देखिए CSS और HTML, पहले हम लोग CSS के बारे में जान लेते हैं। CSS हम लोग तीन तरह से हम लोग HTML में इंक्लूड कर सकते हैं। We can include CSS in three way. One is inline. Inline माने क्या होता है, जहां पर अब जो टैग देंगे उसी जगह हम लोग कुछ कलर कुछ ये करके हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे ये देखिए, ये ब्लू हेडिंग जो है मैंने H1 टैग में मैंने इसका कलर जो है ग्रे कर दिया। हैव गिवन ग्रे कलर to this H1 tags. Okay. So what it did, it changed the color of this heading into blue. Now, तो ये जब हम लोग इसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर ही जब हम लोग जब स्टाइलिंग देंगे तो इसे हम लोग इनलाइन CSS कहेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग है कि आप दूसरा कर सकते हैं इंटरनल। इंटरनल मीन विद इन द पेज, पेज के अंदर ही अगर आप CSS लिख लें। अब CSS लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट पर अगर आपको CSS लिखना है तो उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रेस और जो भी क्लास देना है। तो ये है, ये जो पहला जो एग्जांपल है, दिस इज CSS on okay, since this is a style, it will CSS पे ये इसके लिए क्या देते हैं, ये तो देते हैं, बोल रहे क्यों मैं नहीं। ओके सॉरी। Okay. Yeah, this is just let it be mute for 1 minute. Okay, अजान हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूँगा।
ओके, लेट्स कम हियर। तो हम लोग CSS, जैसा मैंने कहा, CSS हम लोग तीन तरह से ऐड कर सकते हैं अपने पेज में। एक इनलाइन, सेकंड इंटरनल, थर्ड एक्सटर्नल, राइट। इनलाइन का माने क्या हुआ कि इनलाइन मीन मैंने जिस टैग एट्रीब्यूट में चाहा, मैंने उसी टैग एट्रीब्यूट में क्लास दे दिया। ओके, वी हैव गिवन द क्लास ऑन दैट टैग, उसी एट्रीब्यूट में मैंने दे दिया। तो मैंने H1 में एक क्लास दिया, तो क्या हुआ, H1 में वो काम कर रहा है, वो फीचर ऐड कर रहा है, ठीक है। अब सेकेंड आपका आता है इंटरनल। इंटरनल क्या हुआ कि मैंने एक क्लास लिखा और ये क्लास को मैं किसी टैग, किसी एलिमेंट पे मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे अगर देखेंगे तो मैंने एक डिव का कलर ग्रीन किया है। कौन सी डिव का? अब यहाँ पर H1 है, P है और div है। तो क्या हुआ, HTML क्या हुआ, ये CSS के थ्रू वो पहचान गया कि ओके, जो भी div होगा इस क्लास के अंदर, इस HTML के अंदर, उसका तुम कलर को ग्रीन कर दो। तो क्या हुआ, ये मेरे तीन मैंने टैग यूज किया था, उसमें से ये वाला टैग मेरा ये div है। तो क्या किया, वो div को वो कलर ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर मैं इसमें भी डिप करूं, ओके, इसका आईडी दे दूं कि भाई माय डिव, ओके। अभी ये देखिए, ये दोनों को ही ये क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया, क्योंकि मैंने CSS में बोल दिया कि जो भी डिव आए उसका कलर को आप ग्रीन कर दो। ये एक हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है, तो क्या करते हैं, इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, क्लास लिख देते हैं, ठीक है। और इस जगह अब हम लोग, अगर हम लोग चाहें कि नहीं, वो एक ही जगह स्पेसिफिकली वो मेरा जो मेरा जो ग्रीन होगा, वो मेरा पहला डिव नहीं होगा, वो मेरा दूसरा डिव होगा। सेकेंड डिव शुड बी ग्रीन, पहला डिव नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ये क्लास माय डिव, what happened,